Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, here I am with the video again on the Prelims PYQ Series 1 Go Series, जिसमें हम एक किसी भी टॉपिक पे जो भी रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछे वो सारे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो आज वाला जो टॉपिक है दैट इज क्लाइमेटोलॉजी इट्सेल्फ. बट एक याद रखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने जो दिए गए क्लाइमेट एंड टाइप्स जो है ना वो अलग से रखे हैं. वाई इसमें इंक्लूड नहीं किए, दैट इज व्हाट, बिकॉज द सेपरेट वीडियो हैज़ ऑलरेडी बीन मेड फॉर दिस. सो अगर आपने देखा नहीं है तो उस वीडियो को आप एक बार देख लेना अलॉन्ग विद, तो जिससे आपका ओवरऑल क्लाइमेटोलॉजी जो टॉपिक है PYQ उसका कंप्लीट हो जाएगा. नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन याद रखना कि आप पहले क्वेश्चन पहले देखोगे, पॉज करोगे वीडियो, देन ट्राई टू आंसर इट एंड देन लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन आल्सो. चलो, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विल फाइंड स्टेटमेंट 1, the 2024 वाला क्वेश्चन है. The atmosphere is heated more by incoming solar radiations than by the terrestrial radiation. Is it that case? NCERT में guys you will find heat budget is what given diagram, and there you will find incoming जो radiations है वो that will absorb rather 14 units of energy, and outgoing radiations rather absorb the 34 units of energy. Yes, 34 units of energy. That simply reflects कि outgoing radiation से atmosphere is rather heated up more than that of the incoming radiation. So first statement is incorrect. Statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. Yes, they are rather, they allow the short wave radiation, but long wave radiations are absorbed. So you will find 1 is incorrect and 2 is correct. So answer is D. Then consider the following statement. Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Here at poles the thickness you will find 8 kilometers of troposphere क्योंकि यहाँ पे gravitational pull ज़्यादा है, and at equator that ranges almost around 16 to 18 kilometers. So that is more than double. So this statement is correct. Statement 2, at the equator heat is transported to greater heights by strong convectional current. That is equally because perpendicular solar radiations are there, you will find more evenly or more widespread distribution is there, and that's why answer is both are correct and 2 is explanation for 1. Second, which of the following is a correct interferences from isothermal maps in the month of January? That is clearly based on NCERT. Okay, NCERT में you will find the क्लाइमेट मैप दिया है आइसोथर्म्स वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किया है. 2024 में ना NCERT का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है. The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continents. Is it that case? Now you have to remember then this particular case, month of January में ocean में deviation ज़्यादा होगा या continent में होगा. So you will find this map. See, oceans में देखो deviation you will find more है. Yes, isn't it? Continent पे देखो dip दिख रहा है आपको, but when it comes to ocean you will find there is kind of more deviation. So yes, that is correct. The presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic Drift makes the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north. Now one thing, this Gulf Stream is not a cold current. Okay, so do remember North Atlantic Drift even a combination of Labrador current and Gulf Stream. That is not even a truly cold current. Canary current is cold current. Okay, ये statement incorrect है. Answer is like 1 only. ठीक है. Then consider the following statement. ये geomorphology होगा. Statement 1, rainfall is one of the reasons for weathering of rock. Yeah, that is leading to weathering of rock. Statement 2, rainwater contains carbon dioxide in solution. Yes, while falling down it carries the carbon dioxide also. Yes, and rainwater contains atmospheric oxygen. Don't you think so? O2 तो carry करेगा ही करेगा, तो statement तीनों भी तो सही है. Now see option, both ये unique pattern है guys, maybe will be repeated in the examination, so be aware of this thing. Both statement 2 and 3 are correct and both of them explains the statement 1. Answer is A only. Right, यहीं से दिख रहा है क्योंकि दोनों भी correct है और explanation भी है. Now with reference to water vapor, humidity जिसको बोले, which of the following statement is correct? It is a gas. Yes, water vapor, solid ice, liquid water and gas. ठीक है, water vapor, the amount of which decreases with altitude. Right. The percentage is maximum at the poles. Obviously बात है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेंगे rather than the pole. So that is incorrect. So equatorial tropical region should have. So answer is 1. With reference to, ये भी NCERT और वो भी NCERT, सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड है. Reference to periodic source, which of the following statement is correct? Now
It increases with increase in wind velocity. Coriolis force, yes, Coriolis force 18, इसमें क्लास में मैं जनरली कुछ चीज़ें याद रखने के लिए बोलता हूँ. 1844 में हुआ था Coriolis force. That is not due to that is due to rotation of the earth. It is not restrictive but rather deflective force है. It is okay, deflective it is. Then it leads to clockwise or rightward tiltation in north hemisphere and anti-clockwise in south hemisphere. Its speed increases with increase in the speed. Its nature or intensity, it is zero at equator and maximum at poles. राइट, ये क्लास में जनरली मैं इतनी चीज़ें याद रखने के लिए स्टूडेंट्स को वैसे भी बोलता हूँ. ठीक है, सो उसी में देखो इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, यस, एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर. ये भी करेक्ट है. आंसर इज बोथ 1 and 2. ठीक है. देन 2023 with reference to Earth's atmosphere. See, atmosphere में बहुत number of questions रहेंगे. Which one of the following statement is correct? The total amount of solar insolation received at the equator is roughly 10 times that of the pole. See, now that is the fact suggests that it is hardly 4 to 5 times that of the pole. So 10 times gives very extreme number. पहला statement तो नहीं correct होगा. Infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. Now infrared actually emits by the earth surface, though incoming भी infrared आएंगे, but you will find infrared जो harmful infrared है ये O3 already absorb भी कर रहा है. ठीक है, ultraviolet rays and this part of, ठीक है, O3 पूरा नहीं कर रहा है, but yes that way, so that is not into. हाँ, infrared rather terrestrial radiation में 2/3 से ज़्यादा करेंगे. ठीक है. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Yes, water vapor mainly lower atmosphere and absorbed mainly by the water vapor. So this statement seems correct. Wait for. Infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic wave. Is it infrared हम देख सकते हैं? No. आपके जो इलेक्ट्रिक रिमोट्स है ना, या स्पीड गन्स है या अल्कोहल टेस्टिंग मशीन है, इसमें इंफ्रारेड यूज होता है. यहाँ पे हम दैट दोज आर नॉट विजिबल. सो आंसर इज C2. Consider the following statement. Statement 1. The temperature contrast between continents and ocean is greater during summer than in winter. Obviously, बात है, summer में due to excessive heating of the continents and even the ocean, you will find contrast is more than in winter. The specific heat of water is more than that of the land. In fact, water has maximum specific heat. What is specific heat? Let me know in the comment box, guys. ठीक है, specific heat क्या होता है? But yes, ये तो physics का basic सब principle है. Answer is both. Right? They are correct and explanation also. Statement 2. 22. High clouds and low clouds primarily reflect solar radiation. High cloud reflects solar radiation. Is it that case? High clouds are rather transparent to the solar radiation. The reason is they are thin, they are white. Yes, they are generally the indication of fair weather. So and cool the surface of the earth. So that is not the correct. फिर भी देखते हैं, low clouds have the high absorption of infrared radiations emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. Now low clouds are rather better reflector of the sunlight and high clouds are rather absorber of the infrared radiations. तो दोनों भी statement I would say switch कर दिए. ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा neither 1 neither 2. अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है in 2022. that doesn't mean कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. यहाँ पे क्लाइमेट टाइप्स वाले जो क्वेश्चन है मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन आया. 3 to 4 क्वेश्चन आर जनरली एक्सपेक्टेड. 2021. In the tropical zone, the western sections of the ocean, tropical zone मतलब 23 कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच वाला ओशन का जो वेस्टर्न सेक्शन है, are warmer than the eastern section. So ocean का western section are warmer than the eastern section. Is it that case? Yes, that is correct. A reason क्या दिया है? Due to the influence of trade winds. Now we have to check कि like from where these easterlies are moving. अगर हम अर्थ का अगर विंड मैप अगर ड्रॉ करें, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वेस्टर्लीज आर मूविंग लाइक इन दिस वे, है ना. दिस आर दी नॉर्थ ईस्ट विंड, दिस आर दी साउथ ईस्ट विंड. तो वेस्ट में दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दैट सेंस एंड सिंपली रिप्रेजेंट दिस फैक्ट देन कि हाँ यार, ये क्योंकि वेस्टर्लीज ट्रॉपिकल रीजन से आ रहे हैं, सॉरी ट्रेड विंड, राइट, ट्रॉपिकल रीजन से आ रहे हैं, they must be carrying some heat along with them and western section of the ocean getting up. So yes, in the temperate zone, how है temperate zone मतलब कौन सा? Now 30 degree north to 60 degree north, right, and 30 degree south to 60 degree south. यहाँ पर होंगे westerlies and this westerlies are draining in this particular fashion. ठीक है, अब देखो, the westerlies make the eastern sections of the ocean warmer than the western section. Yes, because westerlies are again having their origin in the tropical region. Yeah, this hot subtropical high pressure belt. There it carries high energy and draining into towards this region. Answer is
Both are there are correct. Next, 2020. With reference to ocean mean thermal temperature OMT, which of the following statements these are correct? OMT is measured up to the depth of 26 degree isotherm. ठीक है, depth of 26 degree isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January and March. अब देखो ये क्या कह रहा है कि जनवरी एंड मार्च में साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में टेम्परेचर 26 डिग्रीज है. नाउ दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ केस. अगर हम आइसोथर्म मैप अगर या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द डेप्थ ऑफ द ओशन देखेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ करेक्ट. इतना टेम्परेचर इस डेप्थ पे होना seems not that that possibility. ठीक है. And OMT collected during January and March can be used in assessing whether amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean. तो yes, why not? मानसून के लिए तो हम बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे. सो लाइक कितना स्नोफॉल हुआ है ओवर इन द नॉर्थ अटलांटिक रीजन, राइट. यू विल फाइंड एल नीनो कंडीशन क्या है, ला नीनो कंडीशंस क्या है. देन yes, everything is rather what to be considered over here in this case. ठीक है. तो आंसर इज बेसिकली 2. Next, consider the following statement that is on the jet stream. Now, jet streams occur in the northern hemisphere only. देखो यहाँ पे extreme statement है, same का. Only some cyclones developed an IS. Tropical cyclones rather that they are typical characteristics to develop cyclones. तो second तो correct है. Extratropical cyclone में नहीं होंगे, temperate में नहीं होंगे. The temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degree lesser than that of the surroundings. Is it the case? Answer 10 degree is a huge amount. ठीक है, तो ये नहीं होगा. आंसर टू दिस इज 2 only. ठीक है, जनरली 2 to 3 डिग्रीज का डिफरेंस होगा. दैट इज लीडिंग टू कंडीशन. 2019, इट इज ऑन द ड्यू. Why dewdrops are not formed on a cloudy nights? Why cloudy nights are not responsible for the dew formation? देखो dew formation कब होगा? The vapor transform into liquid. Yes, and you will find dew formation over on the surface. अब उसके लिए चाहिए टेम्परेचर लेस है ना, मतलब टेम्परेचर मस्ट बी बिलो कंडेंसेशन पॉइंट. अब अगर क्लाउडी नाइट्स होगी तो क्या होगा? क्लाउड्स रैदर जैसे हाई क्लाउड्स अभी आपने देखा, राइट. हाई क्लाउड्स रैदर एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट बैक टू दिस स्पेस. इससे क्या होगा? टेम्परेचर विल रिमेन हाई, कंडेंसेशन पॉइंट वोंट बी अचीव and thus you will find ये नहीं होगा. तो क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये एक पॉइंट हो सकता है बिल्कुल. क्लाउड रिफ्लेक्ट्स बैक द अर्थ रेडिएशन. अब ये इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि एब्जॉर्ब कर लेंगे तो दैट इज नॉट लीडिंग टू एनी दैट वे. बट अगर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो सरफेस पर टेम्परेचर कंडेंसेशन पॉइंट के पास नहीं आएगा. एंड दैट इज हाउ इट इज सम हाउ लीडिंग टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू. फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन, द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी nights. Earth temperature, low temperature होगा तो that is favorable for dew formation. तो that is not correct. Cloud reflect the blowing wind to the ground level. No. Answer which is more appropriate is B. ये पहला भी correct है देखो, but B is rather more correct option. Then 2018. The Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. Is it that case? Yes, Earth magnetism flip होता है, आपको पता है, right? Within 1 or 2 lakh years, that flips itself, right? Sometimes 10,000 years also depends. When the earth was created more than 4,000 million years ago, right, 4 billion years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. Is it that case? No carbon dioxide seems very case, and 54% oxygen तो earth surface पे वैसे भी कभी नहीं. Highest percentage of oxygen 28% था. So this statement is incorrect. When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. Yes, that is much इजी टू अंडरस्टैंड फैक्ट है कि जब भी लाइफ रहेगी तो वो इम्पैक्ट तो करेगी. तो आंसर शुड बी 1 and 3, नॉट ऑल. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट.
17 next. With reference to IOD, Indian Ocean Dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is are correct? ठीक है, कौन से IOD के लिए कौन सा इंडियन ओशन डाइपोल क्या होगा? दो डाइपोल मीन्स टू पोल, इंडियन ऑफ इंडियन ओशन. सी IOD phenomena is characterized by difference in sea surface temperature, that is right, between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean. Now, अब जब इंडियन ओशन डाइपोल दिया है, दैट मस्ट बी कनेक्टेड वेल विद द इंडियन ओशन इटसेल्फ रादर देन पैसिफिक ओशन. तो यहाँ पे बाकी तो पार्ट सही है, बट इट्स नॉट अ पैसिफिक ओशन, इट्स रादर इंडियन ओशन इटसेल्फ. Okay, an IOD phenomena can influence an El Nino impact on the monsoon. Yes, it has been observed that IOD can offset the adverse impact of El Nino, right? So ये statement correct है. Answer is 2 only. देखो यहाँ पे ना कभी कभी जनरली स्टूडेंट इंडियन ओशन ही कंसिडर करेंगे. That's why framer must have added in Pacific Ocean there just to check your alertness. 2015. In South Atlantic and Southeastern Pacific region in tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? ठीक है, what is the reason? That because ITCZ जो low pressure condition create करेगा for the formation of cyclone is not well developed there, and that's the reason. ये क्लास में हम generally discuss करते हैं, if you remember. तो sea surface temperatures are low. अगर low होगा तो high pressure बनेगा. That is not a case. Intertropical convergence zone seldom occurs there because the land it is extensively oceanic mass and land mass is rather less. पर फिर भी Coriolis force is too weak. ये भी एक फैक्टर है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे कम होगा. इन एब्सेंस ऑफ लैंड इन दिस रीजन. देखो अब एब्सेंस ऑफ लैंड कनेक्ट कर रहा है इसी केस को मोर अप्रोप्रिएटली ITC से. ठीक है, तो आंसर इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The wind which blows between 30 degree north and 60 degree south latitudes throughout the year are known as westerlies. ठीक है, these are known as westerlies. Yes, that is simply sorry. Now यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक है गाइस. यहाँ पे देखो 30 डिग्री नॉर्थ है ना. इवेल्युएटर भी कैसे, फ्रेमर भी क्या करते हैं, आपके माइंड के साथ अलर्टनेस चेक करते हैं. 30 degree north and 60 degree south. See, if you find 30 degree north and 60 degree south, right? 60 degree north and 30 degree north. There you will find westerlies, right? And even in the south, 30 degree south and 60 degree south you will find. But यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, मतलब थ्रू आउट दिस रेंज. नो, देयर यू विल फाइंड. ये जो रेंज दिया है यहाँ पे इन्होंने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पे होना चाहिए था 60 डिग्री नॉर्थ. Yes, you will find this statement is incorrect. The moist air masses that cause winter rains, okay, that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerly, western disturbances. Yes, so answer is 2. Next, 2014. The seasonal reversal of the wind is the typical characteristics of, that is very well known, monsoon climate. राइट, इसमें देखो मैंने क्वेश्चंस और भी क्लाइमेट वाले क्वेश्चन है जो इस ईयर में आया है, बट मैंने उसको सेपरेट वीडियो में कवर किया है. सो गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो. देन वेरिएशंस इन लेंथ एंड डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू व्हाट? द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ केस. The Earth's revolution round the sun in an elliptical manner. So around you will find ये कर रहा है, बट ये सीजन लीड कर रहा है, राइट? सीजन इन अ सेंस, अब सीजन किस चीज का फंक्शन है? टिल्टेशन एंड रिवोल्यूशन बोथ. तो यहाँ पर सिर्फ रिवोल्यूशन दिया है, सो स्टिल लुक फॉर इट मे बी करेक्ट ऑप्शन. लैटिट्यूडिनल पोजिशन ऑफ द प्लेस. लैटिट्यूड्स डज इट डिफाइन सीजनल? नो. एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस. इट सीम्स मोर करेक्ट. आंसर इज टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. Then the annual range of temperature in the interior of the continents is high. Annual range means what? Difference between maximum time condition temperature average and minimum time, मतलब summer time temperature and winter time temperature का difference is high compared to coastal areas. What is the reasons? ठीक है. Thermal difference between land and water. Yes, thermal difference capacity जो है ये एक मैटर है. Variation in altitude between continents and ocean. Like now we have to check for whether it is really responsible or not. Then presence of strong winds in the interior. Strong winds कहाँ होंगे? इंटीरियर पे होंगे या तो ओशंस में होंगे. You will find presence of the strong wind must be over on the oceanic mass. Yes, फिर भी coastal mass. And heavy rains in the interior, ये हो भी सकता है, देखते हैं. And heavy rains in the interior as compared to कोस्ट. इंटीरियर में रेनफॉल ज़्यादा होगा या कोस्ट पे ज़्यादा होगा? सिंपल सी केस है, कोस्टल रीजन पे ज़्यादा होगा, राइट? तो 4th इज नॉट करेक्ट इन एनी केस. अब देखो हमारे पास बचे ऑप्शन 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3. नाउ वी हैव टू लुक फॉर विच इज रेदर
more appropriate. Strong winds कहाँ पे होंगे? इंटीरियर में होंगे? No. आंसर शुड बी 1 and 2 सी. हर किसी के इसका आपका आंसर लॉजिकली मतलब पता ही होगा, ऐसे नहीं. यू हैव टू इनपुट समथिंग लॉजिकली ऑल्सो. ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय what? Thunder means what? Sound, that is what being produced. Meeting of cumulonimbus cloud in the sky. Yes. Lightning that separates the nimbus cloud and violent upward movement of air and water particles. Now here see all of the above option. And अब क्या करेंगे हम? You will find the lightning is not leading to that case. ठीक है, तो lightning वाला केस तो नहीं होगा. Elimination देखो कैसे करेंगे. Violent upward movement of air and water particles that creates the thunder sound and meeting of cumulonimbus cloud. तो sound create तो करेगा ना, obstruction होगा. तो answer is 1 and. So I hope guys you guys are getting this explanation and you must be finding it much helpful. So this one go series, if you like it, like, share and subscribe to our channel. Thank you.